स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं पढ़ना है। तो लास्ट क्लास में बच्चों देख रहे थे हम लोग Is it connected? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, आ रही है। ओके, अहमद नवनीत। हम लोग देख रहे थे बच्चों ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। उसमें मैंने बात किया था कल इंट्रोडक्शन और साथ में बात किया था इलेक्ट्रॉन इमिशन का। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन व्हिच आर इंपॉर्टेंट, like electronic like thermionic emission. By hitting the metal surface, electrons are ejected and that thermally generated electrons are called thermions. Next was field emission by applying very strong electric field of the order of 10 to the power 8 volt per meter. Electrons are emitted by the metal surface or pulled out from the metal surface. That emission is called field emission, as in a spark plug. And the third kind of emission is photoelectric emission. This emission में suitable frequency of light falls on the metal surface and that electrons are emitted and that electrons are known as photoelectrons, and this phenomena is called photoelectric emission or photoelectric effect. इसके बाद हम डिफाइन किया था वर्क फंक्शन को, the minimum amount of energy needed to eject an electron from the metal surface, and that is called work function. That minimum amount of energy के corresponding जो frequency होगा, that frequency is called threshold frequency, और इसके corresponding जो wavelength होगा, that is called threshold wavelength. That is called threshold wavelength. फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन में हमने देखा कि कोई मेटल का सरफेस है जिसका वर्क फंक्शन फाई नॉट है, एंड दिस इज कॉल्ड एच न्यू नॉट या एच सी अपॉन लेमडा नॉट, एच सी अपॉन लेमडा नॉट। जब यहां पे कोई लाइट हमने फॉल कराया, इस लाइट का एनर्जी होगा एच न्यू या एच सी अपॉन lambda. This is the energy of incident light. If energy is greater than equal to work function, then photoelectric emission take place. और यहां से इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, इलेक्ट्रॉन इमिट हो। Then for PEE, जैसा कि आपने देखा photoelectric emission, energy should be greater than equal to the work function. Energy को लिखा हमने energy of incident light, that is h nu, should be greater than work function का energy h nu naught. h से h को कैंसिल कर दीजिए, nu should be greater than nu naught, where nu is called frequency of incident light
and nu naught is called threshold frequency. Then how you define threshold frequency? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा तभी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पॉसिबल है. इट मींस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को अगर मुझे डिफाइन करना हो तो कहेंगे इट इज द मिनिमम frequency of incident light. It is the minimum frequency of incident light at which photoelectric emission take place. उसका मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसका? इंसिडेंट लाइट का, जहां पे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक प्लेस. एबव विच आराम से होगा, डेफिनेटली होगा. फिर एक बात बोल रहे हैं कि मान लीजिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दिया हुआ है 2 × 10⁻10 हर्ट्ज और इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी अगर मैं लूं 1 × 10⁻10 हर्ट्ज, क्या फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा? नहीं होगा. अगर यहां 2 ले ले तो मे बी टेक प्लेस. और अगर हम 3 ले ले, 4 ले ले, यहां 1 × 10⁻12 ले ले, आराम से होगा. मतलब उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा कुछ भी हो सकता है. और फिर हम यहां डिफाइन कर रहे हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को ऑन द बेसिस ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट. इट मींस नॉट कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द इंसिडेंट लाइट फ्रीक्वेंसी. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी is the property of, बोलिए, property of material. मटेरियल का प्रॉपर्टी है, कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं, ना कि इंसिडेंट लाइट का प्रॉपर्टी है. अब अगर हम बात करें आगे, फिर से अगर हम बात करें कि फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन PEE, energy should be, energy of incident light should be greater than equal to the work function. We can write here hc by lambda in place of E. It should be greater than equal to hc by lambda naught, phi naught की जगह पे hc से hc cancel हो जाएगा. What you will see, 1 by lambda should be greater than equal to 1 by lambda naught. इसको इधर लाइए. Then lambda naught should be greater than lambda. इसका मतलब इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ लैम्डा क्या है? दिस इज द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट. इंसिडेंट लाइट. एंड व्हाट इज लैम्डा नॉट? दैट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. इसका मतलब इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. तो उसका मिनिमम वैल्यू होगा कि मैक्सिमम वैल्यू होगा? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो होगा वो इंसिडेंट लाइट का मैक्सिमम वेवलेंथ होगा अप टू विच फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज पॉसिबल. थ्रेशोल्ड वेवलेंथ lambda naught, it is maximum wavelength of
incident light up to which photoelectric emission is possible. Photoelectric emission is possible. Again, lambda naught is the property of material. And how this threshold wavelength related to the work function? Phi naught is equal to hc by lambda naught, and threshold wavelength you can find by hc by phi naught. यहाँ पे आप 12,400 by phi naught, if you take in electron volt, then the wavelength, threshold wavelength will be in angstrom. If I say for cesium, the work function is how much? 2.14 electron volt. Then what will be the threshold wavelength? 12400 by 2.14, and it will came approximately 6000 के आसपास. $5794 लगभग 6000 के आसपास. इस वेवलेंथ से कम वेवलेंथ इंसिडेंट होगा तभी जाकर के फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा. If I am taking a cesium plate having work function 2.14 electron volt, then threshold wavelength is how much? 5794 angstrom. तो यहां से जो लाइट आ रहा है उसका वेवलेंथ कम होना चाहिए किससे? 5794 angstrom. If you say the visible spectrum VIBGYOR, this is 3800 angstrom and red is 7800 angstrom. 6000 is approximately like यहां कहीं होगा. इसका मतलब कुछ लाइट लाइक वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ये वाला विजिबल लाइट सीजियम से इलेक्ट्रॉन का इमिशन करा देगा. इलेक्ट्रॉन का इमिशन करा देगा कौन? विजिबल लाइट. एंड द सीजियम मेटल इज व्हाट? अल्कली. तो अल्कली मेटल पे विजिबल लाइट भी अगर आप फॉल कराओगे
they can emit the electron. If you take potassium, that is 2.30 electron volt work function, इसके लिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालोगे 12400 divided by 2.3, it is how much? 5391 एंगस्ट्रॉम। भाई इस पे भी विजिबल लाइट करा देगा, कुछ तो करा ही देगा ना, वायलेट इंडिगो ब्लू तक करा देगा। सम पेरेंट्स इज देयर, बेटा हाँ चाय पी लेंगे। If I take sodium, what is the work function of sodium? 2.75. 12400 by 2.75. This will be approximately how much? 12400 divided by 2.75. It is 4509. मतलब ये भी अगर आप जाएंगे तो अल्ट्रा वायलेट के रीजन इंडिगो ब्लू तक हो सकता है, ये भी करा दे। व्हाट यू आर सेइंग कि एल्कली मेटल में विजिबल लाइट भी आप देते हो, दे कैन इमिट द इलेक्ट्रॉन। एंड इफ आई टेक कैल्शियम, इट्स वर्क फंक्शन इज 3.20। ये रटना नहीं है, बस मैं एक डेटा बता रहा आपको। 12400 डिवाइडेड बाय 3.20, 12400 डिवाइडेड बाय 3.2, दैट इज 3875। 3875। इसका मतलब अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल लेते हैं, दैट मे बी द वायलेट लाइट के आसपास दे दे। इससे ज्यादा आगे बढ़ेंगे, दैट विल शिफ्ट टू द अल्ट्रा वायलेट रीजन। कहां जाएगा वो? अल्ट्रा वायलेट रीजन में जाएगा। इफ यू टेक कॉपर, थोड़ा सा चलिए डी ऑर्बिटल वाले में जाए। If I take कॉपर, कॉपर का कितना है? 4.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ विल बी 12400 divided by 4.65. This will become 4.65 2667 angstrom. Where it is? In ultraviolet region होगा। आयरन, कॉपर, निकेल, जिंक, ये सब एक ही ग्रेड में आ रहा है। तो इसका अगर 4.65 है तो ये तो 3D10 है, तो मोटा मोटी मान के चलो ना 5 के आसपास। 5 के आसपास भी रहेगा तो ये तो इसी रीजन में रहेगा। तो इफ यू टेक द जिंक प्लेट, देन ऑल्सो ओनली द अल्ट्रावायलेट लाइट कैन इमिट द इलेक्ट्रॉन। हाँ, उससे कम में कुछ भी कर सकता है ना। अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, कॉस्मिक रे, दिस विल बी वेरी फ्रीक्वेंटली इमिट द इलेक्ट्रॉन, विजिबल नहीं करेगा। हॉलवेच एंड लिनार्ड ने एक ऑब्जर्वेशन किया था फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन। द डिस्कवरी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन की अगर हम बात करें, इसका क्रेडिट जाता है हर्ट्ज को। ड्यूरिंग हिज एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के जनरेशन और डिटेक्शन की बात जब कर रहे थे एक्सपेरिमेंट में, इस दौरान उन्होंने इसकी खोज की और भी इस पे वर्क हुआ, जिसमें हॉलवेच एंड लिनार्ड ने अपने ऑब्जर्वेशन में देखा। उन्होंने जिंक लिया था और जिंक में उन्होंने कहा ये जिंक के प्लेट पे अगर हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन देते हैं, यूवी रेडिएशन, तब यहां से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है। ये कैसे पता कि इलेक्ट्रॉन का ही इमिशन होता है? तो इन्होंने क्या किया, ये वाले प्लेट को एक गोल्ड फील्ड
गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट के साथ जोड़ दिया। और इन्होंने क्या किया, जैसे ही अल्ट्रावायलेट लाइट दिया इसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन का इमिशन हुआ। मान लीजिए यहाँ पे चार्ज डेवलप हुआ, इलेक्ट्रॉन निकला तो इस पे प्लस हो गया, और इन्होंने एक पॉजिटिव चार्ज वाला रॉड को इसके साथ सटाया, टच किया तो देखा कि और फैल गया। इसका मतलब इस पे पॉजिटिव होगा तब ना पॉजिटिव पॉजिटिव लिखा। अगर ये वैक्यूम है, वैक्यूम के अंदर गोल्ड लीफ है, जैसे ही ये सटा हुआ, अभी लाइट नहीं दे रहे तो सटा हुआ, जैसे ही लाइट देंगे इलेक्ट्रॉन इमिशन होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, एंड दिस पॉजिटिव चार्ज विल रिपेल, डिफ्लेक्ट करेगा, लाइट चार्ज रिपेल इच अदर। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वाला एक रॉड लाएंगे तो इसमें और ज्यादा डिफ्लेक्शन हो गया। अगर ये इसके अंदर से कोई पॉजिटिव निकला होता ड्यूरिंग द फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन, इस पे निगेटिव डेवलप होता, और पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल करते तो फिर से सट जाता, लेकिन सटा नहीं, और क्या हो गया, फैल गया। तो ये कंफर्म भी किया था हॉलवेस एंड लिनार्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में कि ड्यूरिंग द फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इमिट करता है। और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या लिया था, उन्होंने जिंक लिया था और अल्ट्रावायलेट लाइट से उन्होंने उसको इल्यूमिनेट किया था। It was found that the certain metals like zinc, cadmium, magnesium, etc. respond to only to the ultraviolet radiations. Or this phenomena is called photoelectric effect. 5-10 मिनट टाइम दीजिए मुझे ब्रेक। श्रुति नहीं है आज। जब तक आप लोग पढ़िए, मैं आ रहा हूँ 5 मिनट।